हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रश्मि। आई होप समस्ते बहुत ही भल थो। आज वीडियो में आम साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉप 30 एमसी को डिस्कसन करवा जोटा कि तुम बहुत ही हेल्पफुल रहा। तुम जेकोसी एग्जाम में प्रिपरेशन कर से LTR हो कि बीएड हो दिन नंबर OSTET हो जो एग्जाम में तुम प्रिपरेशन स्टार्ट माने प्रिपरेशन करुच तुम बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो समस्त को कह वीडियो को लास्ट पर्यंत देख ठीक अच्छे। और जो मैंने चैनल को नुआ आसो से चैनल को सब्सक्राइब करदेव। ओके ठीक अच्छे। क्लास स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने बीएड पेड ग्रुप विषय जानचे से स्किप कर जाए क्लास देखो। जो मैंने जान तो समस्त को कहबी कि आमर टेलीग्राम गोटे पेड ग्रुप अच्छी माने बीएड पिला जो मैंने बीएड एग्जाम 2025 देवाक जाऊँ तुम तो जान जून 1 तुम बीएड एग्जाम जून 1 तुम बीएड एग्जाम। तो जो मैंने एपर्तन प्रिपरेशन स्टार्ट करना और जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कलनी तो समस्त मुझे कहूँ जो मैंने पेड ग्रुप जॉइन होगा चाहो तुम कौन कौन सब सुविधा मिल। फास्ट कथा तुमको सब नोट्स मिल जाए तुम फुल कवरेज नोट तुम इंग्लिश ग्रामर देन रीजनिंग ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस टीचिंग एप्टीट्यूड सब टॉपिक नोट पाई देन तुम MCQ प्रैक्टिस कर क्विज प्रैक्टिस कर डेली तुम क्लास रे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन होची। आउ कौन कर तुम मॉक टेस्ट दे पार ठीक अच्छे। जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे जॉइन होगापी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देख मो टेलीग्राम आईडी अच्छी से लिंक रे क्लिक करके मत मेसेज कर पार। और जो मैंने जापार केमती कौन जॉइन हो यही वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कि मैम मु जॉइन होगा चाहूँगी तो मुझे कहीदेवी केमी कौन तुम जॉइन हो। और जो मैंने जॉइन होगा चाहूँ जल्दी जल्दी जॉइन हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देख टेलीग्राम आईडी अच्छी से लिंक रे क्लिक करके मत मेसेज करदे ठीक अच्छे। ओके चलो जी क्लास सारिकी देख टॉप 30 एमसी को आम डिस्कसन करवा साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी पार्लियामेंटरी सिस्टम। ये तुम गोटे साइलेंट फ्यूचर्स नुह ये भी तुम गोटे साइलेंट फ्यूचर्स नुह ये भी साइलेंट गोटे फ्यूचर्स नुह। तो तुम पार्लियामेंटरी सिस्टम गोटे हम साइलेंट फ्यूचर्स तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन The Indian Constitution is known for being तो कौन है जो राइट आंसर द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तुमर भारतर संविधान को कह जाए। Which features reflects the federal structure of the Indian Constitution। तो कौन है जो राइट आंसर ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स The Indian Constitution provides dual citizenship, single citizenship, no citizenship, only state citizenship। तो कौन है जो राइट आंसर ऑप्शन बी सिंगल citizenship। The concept of fundamental rights in the Indian Constitution is borrowed from देखो तुम borrowed futures गोटे मार्क आसूची बीएड एग्जाम रे ठीक अच्छे। बीएड एग्जाम तुम LTR एग्जाम जेको तुम एग्जाम दियो तुम borrowed futures गोटे क्वेश्चन आसूची। ओके तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट तुम कौटू बरड है पचारि तो कौन है राइट आंसर ऑप्शन ए USA। ओके मत कमेंट सेक्शन में जनइब कि तुम फंडामेंटल ड्यूटीज कौटू बरड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन है राइट आंसर ऑप्शन सी है राइट आंसर पार्ट IV। पार्ट IV तुम डील्स कर DPSP संपर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन केबे अडॉप्ट होता से पचारि केबे 26 नवेम्बर 1949 ले। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन केबे कार्यकारी होता 26 नवेम्बर 1950 रे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूचर्स ऑफ द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन इंडिया सिग्निफाइज ऑप्शन सी है राइट आंसर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑप्शन सी है राइट आंसर ए सोवियत सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 11 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कौन है राइट आंसर मैं ऑलरेडी तुम मुझे पेड ग्रुप रे क्लास करी कहीदी पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 12 हु इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। Indian Constitution provides for
13 नंबर क्वेश्चन देख ऑप्शन ए हम राइट आंसर बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स कौन से पचार कौन हो ऑप्शन सी हम इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। 15 नंबर क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑप्शन डी हम तुम राइट आंसर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 16 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑप्शन बी हम तुम राइट आंसर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो द आइडिया ऑफ ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम एटा कोठू बोरोड होइछि से पचारिछि ऑप्शन बी हम राइट आंसर यूएसए रु। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय को तुम अमेंडमेंट जरिया रे तुमरो फंडामेंटल ड्यूटीजटा ऐड हेतिला ऑप्शन ए हम राइट आंसर 42 अमेंडमेंट 42तम अमेंडमेंट जरिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑप्शन डी हम राइट आंसर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन एटा तुम ऑल द अबव हम ऑप्शन डी हम राइट आंसर ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 20 द इंडियन फेडरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन ए हम राइट आंसर फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। व्हिच आर्टिकल डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल तुम मध्य क्वेश्चन आसुची व्हिच आर्टिकल डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 ऑप्शन ए हम राइट आंसर। The right to constitutional remedies is mentioned in क्वेश्चन नंबर 22 रो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन सी 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 आ एटा तुम हार्ट एंड सोल एटा कह जाए ठीक अच्छे हार्ट एंड सोल। The term socialist was added to the preamble by सोशलिस्ट तुम केतम अमेंडमेंट जरिया रे ऐड है प्रिएम्बल से पचार ऑप्शन ए हम राइट आंसर 42तम अमेंडमेंट जरिया रे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय कौन है राइट आंसर ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा मत कमेंट सेक्शन में जनइब ड्राफ्टिंग कमिटी तुम हेड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच शेड्यूल डील्स विथ एंटी डिफेक्शन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन तुम बहुत ही इंपोर्टेंट व्हिच शेड्यूल डील्स विथ एंटी डिफेक्शन कौन हो राइट आंसर ऑप्शन बी 10 शेड्यूल। जेतिक भी तुम मैं मो क्वेश्चन लेके आसुची सब गुड़ाक इंपोर्टेंट ठीक अच्छे। 26 व्हिच लैंग्वेज वाज ओरिजिनली नॉट इन द 8th शेड्यूल कौन हो ऑप्शन सी इंग्लिश। Emergency prohibition are included in answer is कौन पार्ट पार्ट XB III ऑप्शन बी हम तुम राइट आंसर पार्ट XB III। क्वेश्चन नंबर 28 देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP वाज बोरोड फ्रॉम DPSP तुम कौटू बोरोड होती से पचार ऑप्शन सी हम तुम राइट आंसर आयरलैंड। Question number 29 how many fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution fundamental rights तुम केतोटी अछि ऑप्शन ए हबो राइट आंसर 6टी तुम जानछ पूर्व तुम थिला केतोटी 7टी राइट टू प्रॉपर्टी तुम 44th अमेंडमेंट जरिया रे कोन हटा गला ठीक अछि। Which body enforces fundamental rights तो कौन है राइट आंसर जुडिशियरी। देख तुम मुझे 30 MCQ डिस्कसन कली साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जी भी तुम क्वेश्चन लेके आस सब गुड़ाक इंपोर्टेंट ठीक अच्छे जिते भी क्वेश्चन आज डिस्कसन कले सब गुड़ाक तुम इंपोर्टेंट रोचे तुम आग को जेकोसी एग्जाम दब बीएड हो LTR हो OST हो RST हो जेकोसी एग्जाम दब सब गुड़ाक तुम इंपोर्टेंट ठीक अच्छे।
ओके, थैंक यू ऑल।